So hello everyone, today we'll be talking about the chapter Semiconductor. We have already done part 1. Part 1 में हमने देखा था. आज हम एक बार फटाफट पहले देखते हैं कि क्या क्या हमने देखा है अब तक. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स बेसिकली वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है. कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं. सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब कंडक्टर. तो चलिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं. अ वैक्यूम डायोड हैज टू इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड. ये हमने देखा है. करेक्ट. वैक्यूम ट्यूब्स, इनको वैक्यूम वॉल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे वैक्यूम डायोड्स एंड वैक्यूम ट्रायोड्स. ठीक है. वैक्यूम डायोड क्या होते हैं, इनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कैथोड एंड एनोड, इसके दो पार्ट्स होते हैं. एंड देन वैक्यूम ट्रायोड्स के तीन पार्ट होते हैं. कैथोड, प्लेट एंड ग्रिड. ठीक है. तो इसमें हम आगे देखते हैं. टेट्रॉड हैज 4 इलेक्ट्रोड्स एंड पेंटोड हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि उनका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है. ठीक है. So the devices in which a controlled flow of electron can be obtained are basic building blocks of all the electronic circuits. So what is a wall? Basically, in a vacuum tube, the electrons are supplied by a heated cathode, and controlled flow of these electrons in vacuum is obtained by varying the voltage between its different electrodes. Correct. Vacuum is required in the inter-electrode space, otherwise the moving electron may lose their energy on the collisions with the air molecules in the path. Okay. So in these devices, the electrons can flow only from cathode to anode and only one direction. Therefore, such devices are generally referred as walls. These vacuum tubes devices are bulky, consume high power, operated generally at high voltage, and have limited life at low reliability. सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर जो हम यहाँ से देखते हैं, semiconductor, no external heat or large evacuated space is required for this. Small in size, consume low power, operated at low voltages, long life, high reliability. Cathode ray tubes and computer monitors which work on the principle of vacuum tubes are replaced by liquid crystal display LCD. तो ये हैं कुछ एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर. तो इसमें कोई एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं है. ठीक है. स्मॉल साइज होते हैं, पावर कम कंज्यूम करते हैं, लो वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है. Devices in which the flow of gas can be obtained are in the building blocks of the electronic circuit: holes, protons, electrons, or neutrons. So definitely it's electrons. Question number 2: vacuum tubes are replaced by conductors, insulators, walls, or semiconductors. So the right answer for this will be semiconductors. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो इस चैप्टर का दूसरा नाम ये भी है. ठीक है. सॉलिड्स बेसिकली आपके दो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और एमोर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड्स बोलते हैं. Crystalline solid. In crystalline solids, the atoms or molecules are arranged in regular periodic geometrical pattern over a long range. Sugar, quartz, mica, calcite, sodium chloride, diamond, etc. are the example of crystalline solid. इसमें हम डायमंड के बारे में काफी बात करते हैं. Crystalline solid are anisotropic. Anisotropic, what does anisotropic means? ये हमने पिछले सेशन में भी किया था. Anisotropic means the physical properties like thermal conductivity, elasticity, electrical conductivity, refractive index, mechanical strength and different in different direction. Means अगर हम इनको कट करते हैं तो we find different properties in different directions. They are bound by flat surfaces. They have sharp melting points. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इनको हम सूडो सॉलिड और फेक सॉलिड भी बोलते हैं, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं. इन एमोर्फस सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न्स. रबर, ग्लास, प्लास्टिक, सल्फर एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड. ये सब इसके एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल हैं. ये बेसिकली सुपर कूल्ड लिक्विड है. Amorphous solids are isotropic. Amorphous solid जो हैं वो isotropic हैं. What does isotropic means? This means they have the same property in all the axes, like however you put them. Isotropic means the physical properties are same in all the direction. They do not have well-defined melting and freezing point. ये जो melt और freeze होते हैं वो एक range of temperature पे होते हैं. Classification of solids based on the electrical properties.
Conductors, basically the substances which easily allow the electric current through them is called conductor. Then properties इसमें अगर हम देखते हैं electrical conductivity is high, sigma की वैल्यू 10⁻2 से 10⁻8 एस पर मीटर है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लो होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आपका पॉजिटिव होता है. इंसुलेटर क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर. और सेमीकंडक्टर जो हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं, ये हमने पता है. रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास एक्सेट्रा. प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, sigma is 10⁻11 to 10⁻19 s per meter. The electrical resistivity is high, exactly opposite. Temperature coefficient is negative. Semiconductor क्या होता है? The substances whose electrical properties lie between conductor and insulator are called semiconductors. Germanium हो गया, silicon हो गया. Properties क्या है? Electrical conductivity is higher than that of insulator but lower than that of conductors. Sigma of conductor is greater than sigma of semiconductor is greater than sigma of insulators. तो 10⁻5 से लेके 10⁻6 तक ये लाई करता है. Electrical resistivity is higher than that of conductor but then lower that of insulators. The rho of insulator is greater than rho of semiconductor is greater than rho of conductors. Temperature coefficient of resistivity is negative. R is inversely proportional to T. ये conductivity और temperature का आपके पास ग्राफ है. तो you have graph for this. Semiconductors आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसकी टाइप्स हो जाती हैं. कंपाउंड सेमीकंडक्टर में बेसिकली इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं और ऑर्गेनिक पॉलीमर भी हो सकते हैं. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स. इनऑर्गेनिक के एग्जांपल हैं, ये ऑर्गेनिक के एग्जांपल हैं, एंड ऑर्गेनिक के एग्जांपल पायरोल, पॉली एनालाइन, ये सब इसके एग्जांपल हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पीरियोडिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न ओवर अ लॉन्ग रेंज आर amorphous solids, crystalline solids, insulators or conductors. So right answer for this will be crystalline solids. Question number 2, the physical properties which are different in different directions are termed as isotropy, anisotropy, isothermal or isobaric. So definitely your answer is anisotropy. Silicon and germanium are conductors, insulators, semiconductors, or none of these. So definitely they are the right example for semiconductors. Om Shimpi, hi, welcome to the class. बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड. तो अब हम यहाँ पे बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फोरबिडन गैप, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. अकॉर्डिंग टू बोह द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Hi Aditya Kumar, how are you? All good? Okay. There are well-defined discrete energy levels of electrons in an isolated atom. यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p and like that. और you can say 1s, 2s, 2p. यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं. इनको हम energy level for isolated atom बता सकते हैं. Right? An isolated atom are brought together to form a solid crystal. Various interaction occurs between neighboring atoms. Due to this interaction, there is no appreciable change in the energy level of the inner shells, but the higher energy level are considerably affected without violating Pauli exclusion principle. ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. There will be a splitting of energy levels of an isolated atom into a large number of energy levels for atoms and solid. 1s, 2s, 2p. Valence bond उनको हम बोलते हैं. Forbidden energy gap आता है और उसके बाद आता है conduction band. तो ये डिसाइड करता है, the forbidden gap decide whether your material is conductor, insulator or semiconductor. चलिए आगे बढ़ते हैं. Energy levels
for atoms in solids. Inside the crystal, each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern of surrounding changes. Because of this, each electron will have different energy level. These different energy levels with continuous energy variation from form are called energy bands. The energy band which includes the energy level of valence electron is called valence band. The energy band above the valence band is called conduction band. With no external energy, all the valence electron will reside in the valence band. तो valence band आपके bedroom की तरह होता है. All the electrons when they are having no energy will lie in valence band. Only when they are having energy they will be going to the conduction band. If the lowest level in the conduction band happens to be lower than the highest level of the valence band, in electron from the valence band can easily move into the conduction band. Normally the conduction band is empty. जब हम potential difference देते हैं, जब electron को energy मिलती है, then only they go to the conduction band. But when it overlaps the valence band, electrons can move freely into it. This is the case with metallic conductors. If there is some gap between the conduction band and the valence band, the electrons in the valence band all remain bound and no free electrons are available in the conduction band. This makes the material as insulator. जब conduction band में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो कंडक्शन शुरू होगी नहीं, बिकॉज कंडक्शन कब शुरू होती है, कंडक्शन तब शुरू होती है जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं. और अगर फोरबिडन गैप इतना बड़ा होगा तो कंडक्शन बैंड में कभी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ही नहीं. बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड में gain external energy to cross the gap between the conduction band and the valence band. Then these electrons will move into the conduction band. At the same time, they will create vacant energy level in the valence band where other valence electrons can move. Thus, the process creates the possibility of the conduction due to the electrons in the conduction band as well as due to the vacancies in the valence band. Forbidden energy gap. The energy gap between the valence band and the conduction band is called as forbidden energy gap. No electron will exist with an energy level in forbidden gap. The minimum energy required at 0 Kelvin to produce electron hole pair in a semiconductor is equal to the forbidden energy gap. ये यहाँ पे ये filled है, conduction band भी empty है और बीच में जो gap है, this is forbidden gap. Infinitely large number of states each occupied by 2 electrons at 0 Kelvin. The energy band position in a semiconductor at 0 Kelvin, the upper band is called the conduction band, consists of infinitely large number of closely spaced energy bands. The lower band called valence band consists of closely spaced completely filled energy states. The lowest energy level in the conduction band is shown as EC and the highest energy level in the valence band is known as EV. Above EC and EV, the gap between the top of the valence band and the bottom of the conduction band is known as energy band gap. इसको हम forbidden gap भी बोलते हैं. यहाँ पे इसको हम forbidden gap भी बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. It may be large, small or zero depending upon the material. कि ये जो material है ये superconductor है, conductor है, semiconductor है, insulator है, क्या है? Okay. To understand the modification of energy levels, consider a single silicon crystal containing n atoms. For silicon atom, Z is equal to 14 electron configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. The number of valence electron is 4, 2s electron and 2p electron. Therefore, the total number of valence electron in the silicon crystal is 4n. The maximum number of electrons in the outer orbit of Si atom can be 8, 2s electron and 6p electron. It means for 4n valence electrons, there are 8n available energy states. Why is silicon preferred to germanium for semiconductor devices? Silicon है, germanium है. At room temperature, silicon crystal have fewer free electrons than germanium crystal. This implies that the silicon will have much smaller collector cutoff current than germanium. The variation of collector cutoff current with the temperature is less in silicon compared to germanium. The structure of germanium crystal will be destroyed at higher temperature. However, silicon crystal are not easily damaged by excess heat.
But there is a disadvantage for silicon over germanium. The potential barrier of silicon is more compared to that of germanium. But if we consider the advantage listed above, we can conclude that the silicon is the best element for the semiconductor device and appliances. Peak inverse voltage ratings of silicon diode are greater than germanium diode. Silicon is less expensive due to the greater abundance of element. The major raw material for silicon wafer fabrication is sand, and that is a lot of sand is available in nature. तो silicon तो हमें nature में abundance बहुत 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 ज़्यादा मिला है, but proper grade के लिए we still have to filter it. With this, we'll wind up today's session, and then we'll meet in the next session of semiconductor.